beautiful people, this is your mother Shan Khan and welcome back to my YouTube channel Nashikar Shan. So guys, it's been 3 months हम घर से बाहर नहीं थे, राइड नहीं कर रहे थे. So अब एक एक फेज पे सब कुछ खुल रहा है. तो फाइनली आई डिसाइडेड टू गो ऑन अ शॉर्ट राइड टुडे टू सिन्नर विंडमिल्स. अब मुझे पता है तुम लोग बोलेंगे भाई ऑलरेडी ब्लॉग है तुम्हारा सिन्नर विंडमिल्स का. आई नो गाइस, मेरा ऑलरेडी ब्लॉग है, बट वो ब्लॉग जब हमने शूट किए थे, एडिट किए थे, अपलोड किए थे, एट दैट टाइम आई वाज कंप्लीटली amateur. I didn't had any idea about how to record cinematic vlogs, how to edit your videos. मैं अपनी वीडियोस नॉर्मल विंडोज मीडिया प्लेयर में एडिट करता था. बट अब जब हम बोलते हैं ना थोड़ा 40-50% सीख चुके हैं, सो वी वुड बी आज एक अच्छा ब्लॉग बनाएंगे जिसमें आप लोगों को अच्छा खासा ब्लॉग भी देखने मिलेगा, सिनेमैटिक भी देखने मिलेगा. नाउ गाइस, टॉकिंग अबाउट द वे, आई एम नॉट गोइंग फ्रॉम द सेम वे देवलाली भगुर में, उस रास्ते से नहीं जा रहा हूँ. आई एम गोइंग फ्रॉम नासिक पुणे एक्सप्रेस वे, वेयर आई विल बी शोइंग यू गाइस इफ यू रिसाइड टू नासिक रोड और नासिक, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गो फ्रॉम दिस साइड. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जाते हैं पार्किंग में. बाइक कौन सी लेके जा रहा हूँ मुझे कंफर्म नहीं है. मैं अपनी टाइगर लेके जा रहा हूँ या एवेंजर लेके जा रहा हूँ, मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया हूँ. सो मैं पहले अपनी बोलते हैं ना बाइक जाके देखूंगा बैटरी किसमें चार्ज है, कौन सी बाइक चालू होगी, एंड आफ्टर दैट हम बाइक लेके निकलेंगे. सो टिल देन गाइस, सी यू इन द पार्किंग. So guys, this is my Tiger, that's Royal Enfield Himalayan. और साइक्लोन के वजह से हमने इसको पैक करके रखे थे. एंड अगर इसकी डिलीवरी की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन माय चैनल. पता नहीं ये चालू होंगी कि नहीं होंगी, बिकॉज बहुत दिन से खड़ी हुई थी. एंड इट्स बैटरी इज फाइन, चालू हो गई. आई एम कंप्लीटली गेयर्ड अप. मैं अपनी टाइगर लेके जा रहा हूँ. अब मैं वेट कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड अमित के लिए. वो जैसा आता है वैसा हम निकलते हैं. हमारे अमित भाई, इनके लिए हम वेट कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लेट हो गए. अब ज़्यादा नहीं लेट हो गए. डायरेक्टली सी यू गाइस ऑन द रोड. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो दिस इज अ नासिक पुणे एक्सप्रेसवे. इसका मेंटेनेंस शायद नारायणगांव तक हो चुका है, बट इट्स स्टिल अंडर मेंटेनेंस. एंड सिटी से हाईवे तक का रोड पता दिखता. नासिक रोड तक हम बहुत अच्छे से आए, लेकिन नासिक रोड के बाद इट वाज पटेटिक. उसका भी काम चालू है. लेट्स सी कब काम करता होगा. लेट्स इंडियन गवर्नमेंट. और सबसे पहले हम डलवाएंगे पेट्रोल, बिकॉज गाड़ी में पेट्रोल नहीं है. सांभाळून ना, अर्धच पाईप जातं आतमध्ये, एवढाच पाईप जातो. उसके अंदर संभाल के डालते. तो गाइस, अभी मैंने पेट्रोल डलवाया और एक मैंने DIY यूज किया पेट्रोल पंप पे. अपने डेबिट कार्ड का पिन डालने के लिए मैंने अपनी बाइक की की यूज की. So keep in mind that whenever you go to petrol pump, if you are using a debit card, use your key to enter the pin, because बहुत से लोग मशीन को हाथ लगाते हैं. ओ इतने सारे स्पीड ब्रेकर. इसको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए.
बड़े 12, छोटे टोटल 20 स्पीड ब्रेकर्स। And this is a beautiful Sinnar Ghat। छोटा है बट कर्व्स अच्छे हैं कॉर्नरिंग के लिए। इट वाज रिस्की, मेंटेनेंस के पहले ये बहुत रिस्की था, बट अभी मेंटेनेंस हुआ है तो इट्स बोलते हैं ना, बहुत अच्छा हो गया है अभी। और एंड द सिटी इन द फ्रंट इट्स सिन्नर गाइस, बट हम स्ट्रेट जाएंगे, हम लेफ्ट नहीं लेंगे। अगर आप लेफ्ट लेंगे तो यू कैन गो टू शिरडी सिन्नर, इसको बोलते हैं सिन्नर बाईपास। नाउ वी विल गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर। And it's time to leave the highway from here, and we would be taking right for Goti highway as our destination is there. So left is Shirdi Sinnar and right is Goti Igatpuri. अब यहाँ पे विंडमिल आपको दोनों साइड दिखेंगे, बट वी नीड टू टेक अ राइट फ्रॉम हियर बिकॉज वो एक अच्छा लोकेशन है जहाँ पर हम हमेशा जाते हैं। सो यू कैन टेक अ राइट फ्रॉम हियर एंड यू कैन सी योर डेस्टिनेशन इज इन फ्रंट, दैट्स विंडमिल्स। ब्यूटीफुल वेदर, सही टाइम पे आए, टाइम लैप्स और सिनेमैटिक शॉट बहुत अच्छा आएगी। कोणत्या साईड याने So finally guys, we have reached windmills Sinnar, you can see behind the windmills। हम पहुंच गए। हम यहाँ पे आके पहले अभी थोड़ा टाइम लैप्स लेंगे, थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स लेंगे। तो गाइस यू कैन कम डाउन टू चिल ओवर हियर। अब लॉकडाउन के बाद बहुत प्रेशर है, बोलते हैं ना 3 महीने से घर में अटके हुए थे। सो यू कैन कम डाउन ओवर हियर, यू कैन हैंग आउट। ज़्यादा मत लोग आओ, 2-3 लोग आओ, ज़्यादा लोग मत आओ। तुम लोग यहाँ पे आ सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज दिस प्लेस इज ऑसम फॉर फोटोशूट। तुम यहाँ पर आके फोटोशूट कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, चिल कर सकते हो। तो अभी हम करेंगे फोटोशूट, तुम लोग जब तक के सिनेमैटिक एंजॉय करो।
साथ ही हमारा थोड़ा प्लान हो गया ऑफ रोडिंग एंजॉय करने का, सो यू कैन एंजॉय दैट एज वेल। सो गाइस हम लोग का फोटोशूट हो गया, हमने थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर लिया जो कि तुम लोगों ने ब्लॉग में देख चुके होगे। अब फोटोशूट के पिक्चर्स देखने के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई ID इट्स मी irshan_khan, so you can follow me on Instagram out there, and if you have liked this video don't forget to give a thumbs up, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलना। That's it guys, so see you guys in my next video। अब मैं ज़्यादा टाइम पे का रिकॉर्ड नहीं करूँगा बिकॉज सेम मैं रोड नहीं बताना चाहता हूँ, तो ज़्यादा टाइम पे का नहीं रिकॉर्ड करूँगा। एंड that's it, in the end दुआ में याद रखना।